Hello, everyone. Welcome back to the Organon classroom with Dr. Gazala. We are here with episode 3 of our lecture series for chronic miasms by J.H. Allen. All right. This is especially for students. If you would like to have the PDF of these printed notes on Chronic Miasm by J.H. Allen, then simply follow me up on Instagram at the Organon Classroom, or you'll have to comment PDF under the Chronic Miasms by J.H. Allen post, and I'll personally send you the PDF. Okay, and it's going to be free of charge. So, yep. Happy learning, and let's start with the lecture for today. In our last video, we laid the foundation for understanding the relationship between pathology and chronic miasms according to Dr. J.H. Allen. Today, we dive in further in this concept and we are going to study the pathology and abnormal growth in this relation. We are also going to speak about Psora and Pseudosora along with certain examples from the book. So, starting with our lecture, the two competing visions of human pathology. Remember the battle of medical paradigm that we studied earlier in our last video? We'll have a quick recap about it over here as well. So, the battle between orthodox medicine, the one followed by Rudolf Virchow, या Virchow, जो भी आपको spell it right, versus scientific homeopathy by Hahnemann. Okay, now this makes an excellent introduction to your answer when you are speaking about the relationship between the pathology and abnormal growth and anything of the chronic miasm part according to J.H. Allen. Okay, so make it clear, make it bullet point and understand this one. So orthodox medicine का focus क्या है? Cellular pathology, localized material changes, right? Method, complex chemical prescriptions and therapeutics. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेड और लाइव वायरस और वैक्सीन कैसे यूज किए जा रहे थे इस बारे में पढ़ा था. If you don't remember, go back and check that out because that also forms an important point when you're explaining this pathology. Flaw क्या है orthodox medicine का? Lacks fixed principles, ignores the vital force, treats the body as a purely chemical machine. ठीक है? Versus scientific homeopathy by Hahnemann, focus the dynamic life principle and the internal vital force. अपने में कुछ भी material नहीं होता है, not even the medicinal part which goes to the patient. ठीक है, हम लोग dynamic level पे काम कर रहे हैं, that is why we are effective, right? So the method guided by the organon and established 7 cardinal principles. याद रखना है. Along with strength, uses the law of similars as the foundation of rational predictable therapeutics. ठीक है, अब predictable क्यों है? Because एक standard और एक fixed law use किया जा रहा है. You're not just empirically mixing and giving up something to the patient कि ऐसे आ गया तो 4-5 दवाई मिला के एक दे दो, one covering the side effect of the other. तो effect कौन कर रहा है? You really don't know about it. But when you are following up these cardinal principles of Hahnemann, I hope you guys know those, along with the law of similars, like cure likes, similia similibus curenter. ठीक है, वो जब होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रेडिक्टेबल थेराप्यूटिक एक डेवलप होगा, जिसका मतलब है कि क्योर या रिकवरी इज गोइंग टू बी ऑन द वे फॉर दैट पर्टिकुलर केस. Now comes in the prima causa morbi, an important part of this lecture and this concept and this book. All right. So don't see the text part right now on the screen. Just see the picture that you can see. Okay, divided into two. दिख रहा है आपको above the ground and below the ground. Above the ground क्या दिख रहा है आप लोगों को? Wilted tree दिख रहा है, ये ऐसे spines वाला एक ऐसे spiral दिख रहा है. Okay, then all this is the dried up tree, the crooked one, and then the wilted flower, right? Below the ground क्या दिख रहा है? Can you see the roots of it? Can you see the brown soil of it? And the roots all joined in and interconnected with an epicenter जहाँ पे लिखा है the miasm, right? Now understand this while I am telling you these statements. Above the surface, what you see are the visible expressions. Visible expression से क्या मतलब है? Chronic diseases, organ failures, recurrent symptoms, जो कुछ भी manifestation आपको disease का दिख रहा है, चाहे वो कोई भी disease हो, ठीक है? External factors alone cannot explain chronic diseases.
This is what J.H. Allen has to talk about, things that are above the ground in this picture. Below the surface, a latent inherited internal cause connected to the dynamic disturbance of the life force or the vital force. एपिसोड 1 में गो बैक एंड रिकलेक्ट, हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस किया था, माइजमेटिक डायथेसिस, सही है? कैसे उसको हमने रिलेट किया है विद द सॉइल ऑफ दैट डिजीज, वो सॉइल जैसे रहेगा आगे जाके डिजीज उस तरह से ही डेवलप होने वाली है, ठीक है? तो वो जो सॉइल था माइजमेटिक बैकग्राउंड का, दैट इज ऑलवेज इन द लेटेंट स्टेज. वहां पे भी ऑल्सो स्पोक अबाउट द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कैसे वो इनहेरिट होती है वो सारी चीजें, एंड देन लेटर ऑन इट डेवलप्स व्हेनेवर देयर आर ट्रिगर्स टू इट, राइट? तो वो जो है इट ऑलवेज स्टेज इन द लेटेंट स्टेज. अब उसमें से इरप्ट होने वाली चीजें इज व्हाट J.H. Allen defines as the miasm to be the primary cause of disease. The prima causa morbi, prima primary, causa cause, morbi morbid, morbid matlab diseases, right? So the primary cause of the disease is this miasm. A true physician perceives the disease through this underlying miasmatic expression, right? तो ये perceive करने के लिए the most important part for the physician is tactful and detailed case taking, right? Case taking is not a joke, guys. Case taking is not something which you yourself से कि नहीं 1-1.5 घंटा लग जाता, तो 1-1.5 घंटे में आप कर क्या रहे हो? वो 1-1.5 घंटे में यू आर knowing that person what, not on a personal level, you are knowing that person on a clinical level, ठीक है? तो वो क्लिनिकल लेवल क्रैक करने के लिए यू नीड अ चीट कोड. और वो चीट कोड क्या है? डाइव इनटू द फैमिली हिस्ट्री ऑफ दैट पेशेंट, ठीक है? फैमिली हिस्ट्री जब लेते हैं इट इज नॉट लिमिटेड टू, ठीक है, आपके पेरेंट्स को क्या था, आपके फैमिली में कोई बड़ी बीमारी, आपको किसी को डायबिटीज, हाइपरटेंशन, टीबी वगैरह हुआ है, दैट्स इट, दैट्स द ओनली क्वेश्चंस वी यूजुअली एंड अप आस्किंग, राइट? जहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर J.H. Allen, वी आर फॉलिंग शॉर्ट ओवर देयर. ऑल राइट, आगे जाके वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग को कौन से लेवल तक फैमिली हिस्ट्री में क्वेश्चन और इंटरोगेट करना है, ठीक है? फॉर नाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दैट माइजम इज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिजीजेस एंड अ ट्रू फिजिशियन मस्ट परसीव द डिजीज थ्रू दिस अंडरलाइंग माइजमेटिक एक्सप्रेशन. ओके, नेक्स्ट, Sora. So let's launch Sora over here and start understanding this. One may question that if Alan has given so much importance to psychosis, and if this is about the rise of psychosis, the book is about the predominance of psychosis as a miasm, why are we studying Sora first? We are studying Sora first because we need to get our basis right. We are going to cover Sora, pseudosora, and then psychosis and syphilis. कहीं से भी rise होने के लिए आपका base या foundation होना बहुत जरूरी है, strong, ठीक है? तो वो strength आएगी यहाँ से, ये सोरा से. All right, so that is why we are covering up this first. Okay, now the history of Sora, the parent of all diseases. It is derived from the Greek word to itch, differentiated from leprosy by priests in the third book of Moses. ठीक है? Now these are not my words. This is what it is given in J.H. Allen. Okay, as it is, अपने को यही लिखना है. Transmission, highly contagious, historically transferred through a simple handshake or touching an infected person's garments. Okay, understand this. The pathognomic symptom, the defining characteristic is itching, a symptom notably absent in syphilis and psychosis miasm. The scope, a broad miasm causing multitude of material, functional, and pattern changes within the body, typically beginning as a fine vesicular eruption. ठीक है? This is what you are going to write well. Okay? Otherwise, the definition that we usually tell for Sora is, सबसे पहले माइजम वाला डेफिनेशन लास्ट वीडियो में भी बोला था, अभी भी रिपीट कर रहे हैं. माइजम इज डिफाइंड एज द डायनामिक ऑब्नॉक्शियस डिजीज कॉजिंग एजेंट विच इज इनिमिकल टू लाइफ. ठीक है? अब अगर सोरा के बारे में उसमें ऐड करना है अबाउट द सोरिक माइजम, देन द वन विच इज नॉन वेनेरियल इन ओरिजिन, manifested usually in the form of an itch, right?
यहाँ पे हम क्या बताएंगे, अ ब्रॉड माइजम कॉजिंग अ मल्टीट्यूड ऑफ मटेरियल functional and pattern changes within the body, typically beginning as a fine vesicular eruption. Okay, same concept, different words. जैसे आप सब लोगों को पता है अभी तक तो, फोर्थ ईयर्स अभी जो एग्जाम के लिए जा रहे हैं, सोरा इज गोइंग टू मैनिफेस्ट एट फंक्शनल लेवल, राइट? उसकी चीजें जो है, एक्सप्रेशंस, वो आपको यूजुअली फंक्शनल लेवल पे दिख जाती है, इसीलिए हमारा स्कोप भी उस लेवल पे ज्यादा हो जाता है फॉर इम्प्रूवमेंट। ओके, टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स, टू गेट द बेस्ट रिकवरी एंड क्योर। ठीक है, बट ये फंक्शनल कब स्ट्रक्चरल हो जाता है, दैट फाइन लाइन, okay, is how I am going to teach you to differentiate and learn in, especially when you're dealing with medicine में, जैसे आपको माइज्मेटिक डायग्नोसिस ऑफ सर्टेन डिजीज आएगा ना, तो वो हम कौन से लेवल पे कौन सा माइज्म कैसे जाएगा, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट, ओके, इन आवर लेटर लेक्चर्स अभी। एंड दिस इज स्पेशली फॉर द फोर्थ ईयर नाउ बिकॉज दे आर एग्जाम गोइंग, and I hope you guys do well in your exams and retain all your concepts well for all your subjects, okay? तो द एवोल्यूशन ऑफ डिजीज कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, दिस फेज वन, फेज टू एंड फेज थ्री। तो अभी ना अपन ने इसको ना हेडिंग्स दे दी है, सिंपल वाली, द सिंपल लाइफ, अर्बन माइग्रेशन, केमिकल थेराप्यूटिक्स, ठीक है। सिंपल, ये कैसा हुआ है, जो डिजीज कोर्स रहा है, ओके, इन ह्यूमैनिटी, इन मैनकाइंड, वो कैसे चेंज हुआ है। द इजराइलिट्स मेंशनड मेंटेन्ड गुड हैबिट्स एंड सिंपल लिविंग, कीपिंग देम रिलेटिवली फ्री फ्रॉम इंटरनल माइज्मेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अब ये जो सारे वर्ड्स है ना, ये बुक के वर्ड्स है, ये मेरे वर्ड्स नहीं है, okay, this is how it is given in the book, this is what J.H. Allen's views were, so we are going to follow that up for our academic purpose. Phase 2, urban migration, moving to cities led to corrupt habits, overcrowding, and poor ventilation in cellars allowed the soric miasm to become rampant. Chemical therapeutics, internal mixtures of arsenic, mercury, and quinine were introduced alongside local medications, leading to systemic suppression. ठीक है, तो this, it's not a rocket science to understand this thing of, it is as simple कि जब सिंपल लाइफ रही थी, ठीक है, जब हम बोलते हैं ना पहले के जमाने में ऐसा था, पहले के जमाने में तो ये बीमारी नहीं थी, पहले के जमाने में तो लोग मजबूत थे, they were all good enough, everything was seamlessly carried off effortlessly, people were strong enough and they had longer lifespans, ठीक है, उनकी quality of life was something else, ठीक है, तो वहां पे दे वे फ्री फ्रॉम द इंटरनल माइज्मेटिक प्रोग्रेशन, उनके वहां ट्रिगर्स ही नहीं थे ना जो उसके साइड इफेक्ट्स या बैड इफेक्ट्स ऑफ दैट माइज्म निकाल कर लाए, राइट? तो जैसे अर्बन माइग्रेशन हुआ, व्हेन पीपल स्टार्टेड मूविंग आउट, और जे.एच. एलन का तो व्यू ही था, सोरा क्यों होने वाला है, नेगेटिव थिंकिंग से होगा, कॉन्शियस वगैरह जब इफेक्ट होगा, मोरल आपका जो पर्सन है उसका अगर कंटामिनेट होगा मतलब परवर्ट होगा, परवर्ट होगा मतलब खराब होगा, ठीक है, नॉर्मल नहीं होगा, तब जाके सोरा होने वाला है। दिस हैज बीन जे चैलेंज व्यू, सो दैट कम्स इन स्ट्रेट थ्रू एंड थ्रू इन दिस अर्बन माइग्रेशन पॉइंट की जब ओवरक्राउडिंग और पुअर वेंटिलेशन जगह में चले गए, द सोरिक माइजम बिकेम रैम्पेंट एंड मूविंग टू सिटीज लेड टू करप्ट हैबिट्स, परवर्ट हैबिट्स, ठीक है। फिर केमिकल थेराप्यूटिक्स, अब जब बीमार रह रहे हैं और यहाँ पे मेडिसिन इज प्रोग्रेसिंग, तो वहां पे व्हाट मेडिसिन आर गिवन, आर्सेनिक, मर्क्यूरी एंड क्विनीन वर इंट्रोड्यूस्ड अलोंगसाइड लोकल मेडिकेशंस लीडिंग टू सिस्टमिक सप्रेशन। इफेक्ट्स तो दिख रहे थे बट अंदर ही अंदर जो उसके साइड इफेक्ट्स हो रहे थे, दोज लेड टू सप्रेशन, ठीक है। अनदर important concept which is going to come in this lecture only, but first we are going to deal with the protective function of eruptions, ठीक है। जब skin eruptions होते हैं, so what does it mean, okay? The orthodox school treats outward expressions as local issues, failing to recognize them as the exhaust walls of deep seated internal disorders, ठीक है। अभी अपने में क्या कॉन्सेप्ट है कि वाइटल फोर्स जो है ना, फर्स्ट तो वो अपने ही लेवल पे इट इज गोइंग टू थ्रो आउट द डिजीज टू लेसर इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, ठीक है। वैसे तो स्किन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, उसकी वजह से ही थर्मोरेगुलेशन है, उसकी वजह से ही वी आर व्हाट वी आर, ठीक है। बट इन
relation to or in comparison to the other ones उसको अपन lesser important बोल देते हैं. All right. तो vital force itself is throwing diseases out on the surface. तो इसीलिए आपको दिखेगा rashes, इसीलिए आपको दिखेगी एक sometimes people just have a tendency कि कुछ भी हो जाए ना, they'll have something red, the skin becomes warm. That is their signals or the signs before they actually project with disease symptoms later, जो दूसरे organ level पे होने वाले हैं. ठीक है. तो अपना ये कोर दिख रहा है आप लोगों को. ठीक है. दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर गाइस. ठीक है. इसको ऐसे ही याद रखना सो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू राइट इन एग्जाम्स. ओके. तो द कोर, द वाइटल फोर्स एंड लाइफ सस्टेनिंग इंटरनल ऑर्गन्स, ये है. फिर उसके बाद में ये एरोज आपको दिख रही है. सबसे बाहर जो बाउंड्री है, skin eruptions are the outward manifestations of an internal disorder placed on the surface to preserve life and protect vital organs. ठीक है. अभी preserve life आ गया ना, ये ऐसे ये words ना यूज करने अपने को आंसर में. ओके. नेक्स्ट इज द वेक्टर. the vital force actively pushes the disease outwards. ठीक है. The boundary, again, the skin eruptions are outward manifestation of an internal disorder. Okay, this got repeated, but yeah. अंदर वाइटल फोर्स में इशू होगा, अंदर वाइटल फोर्स में प्रॉब्लम होगा एंड इट इज थ्रोइंग योर डिजीज आउटवर्ड इज व्हाट द स्किन इरप्शंस ऑफ फॉर. और जब ये स्किन इरप्शन हो रहा है, इट इज अ साइन दैट द लाइफ फोर्स इज प्रिजर्विंग इटसेल्फ. ठीक है. वाइटल फोर्स के डेफिनेशन आपको अगर याद होगा तो उसमें है कि हाउ इट इज सेल्फ प्रिजर्विंग. क्वालिटीज ऑफ वाइटल फोर्स व्हेन वी टॉक अबाउट गाइस, याद है वो? गो बैक एंड रिवाइज, बिकॉज जब तक ये कवर करेंगे तब तक आपके एग्जाम्स भी हो चुके होंगे, बट यू नीड दिस फॉर योर क्लिनिकल प्रैक्टिस एज वेल. ओके. तो वो सेल्फ प्रिजर्विंग क्वालिटी जो है ना, वो यहाँ पे आती है फॉर स्किन इरप्शंस. लेकिन ऑर्थोडॉक्स स्कूल क्या ट्रीट करता है कि आउटवर्ड एक्सप्रेशन है ना, वो एक अपने में ही एक अलग लोकल डिजीज है, अपने में ही एक लोकल इशू है. तो वहां पे दे फेल अप टू रिकॉग्नाइज कि दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ एन एग्जॉस्टेड डीप सीटेड इंटरनल डिसऑर्डर. राइट. तो यहाँ पे जब इरप्शंस होते हैं तो लोकल ऑइंटमेंट्स, लोकल एप्लीकेशन, लिनेमेंट्स वगैरह ये वो सब देके इसको सप्रेस किया जाता है. तो डिजीज वाइटल फोर्स जो बाहर आ गई है, अगेन इट इज थ्रोन इनवर्ड्स. Suppression becomes quite an important topic for us as students of homeopathy, both academically and clinically. Suppression is something that people suffer from, all of us actually, some or the other form. There is suppression going around and later on which manifests, चाहे वो physical level पे हो या mental level पे हो. ठीक है. तो इसीलिए केस टेकिंग, टैक्टफुल केस टेकिंग जो मैं बोल रही हूँ फर्स्ट एपिसोड से, यहाँ पे वो काम आती है. फर्स्ट टू सी द लेटेंट माइज्म का पार्ट, जो माइज्मेटिक सॉइल है अपने को वो कैसे डिकोड करना है. नेक्स्ट इज व्हाट वी विल चेक आउट फॉर सप्रेशन. ठीक है. चाहे वो एक फोर्डम क्रीम यूज करना क्यों ना हो फॉर आवर स्किन और समथिंग, समटाइम्स व्हेन इट इज टू इची और यूजिंग कैंडिट्राल और व्हाटएवर. ऐसे इट्स दे लोकल, यू गेट ओटीसीज, ओटीसी है, ओवर द काउंटर मेडिकेशंस मिल जाते हैं बहुत इजीली. वो कभी यूज किया होगा, कितने टाइम के लिए यूज किया होगा, उसके जो इफेक्ट्स बाद में दिखने वाले हैं becomes more important for us. So that is why we ask for personal history and family history guys. ठीक है. personal history is not just आपको कभी कोई बड़ी बीमारी हुई है, कभी हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा है. नो, इट इज मोर देन दैट. ठीक है. तो ये है सप्रेशन, मेंटल लेवल सेपरेशन. तो वी आर गोइंग टू जस्ट हैव वन एक्सक्लूसिव एपिसोड ऑन दैट. आज के टाइम में मेंटल हेल्थ related topics and all of this, they all have the roots over here in our humble suppression concept. Okay. तो अभी जय चैलेंज का क्या है फिलहाल वो करते हैं. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर अप ऑल दैट विच आई स्पोक अबाउट. So the mechanics of suppression. The action. Attacking local expressions with modern medicine completely suppresses the protective surface eruption. ठीक है. अब ये हम लोग with reference to our local skin eruption करेंगे जो पिछली स्लाइड में था. ठीक है. तो जो डिजीज वाइटल फोर्स है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन के हिसाब से
अपनी डिजीज को बाहर फेंकता है ऑन द स्किन सरफेस, ठीक है। अब स्किन सरफेस पे अगर लोकल एक्सप्रेशन जो है उस पे मॉडर्न मेडिसिन लगा के कंप्लीटली सप्रेस कर देंगे, सो व्हाट आर वी डूइंग, वी आर suppressing the protective surface eruption. The consequence, the disease is driven deeper from less important surface organ to highly critically internal organs. The result, the dynamic disturbance becomes latent, aroused, and highly complex, making the patient's condition significantly more dangerous. Obvious सी बात है, जब लेसर इंपॉर्टेंट से मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन पे आ जाते हो तो वहां तो अंदर दिख भी नहीं रहा है कि व्हाट चेंजेस आर हैपनिंग, राइट। चाहे आप सीटी करा लो, एमआरआई करा लो, कुछ भी करा, यू एग्जैक्टली कैन नॉट perceive कि कौन से मोमेंट पे that disease is going to progress that further. Yes, you can give the prognosis of that disease, okay, we've got all our technological advances in one place, but with what speed is that disease progressing will only depend कि वो किस हद तक सप्रेस हुआ है या उस डिजीज की सिवियरिटी क्या रही है, ठीक है। So the key takeaway over here is the orthodox school treats outward expression again as the local issues, failing to recognize them as the exhaust walls of the disease vital force, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे एजेंट्स दैट ड्राइव द डिजीज इनवर्ड्स, ठीक है। इन कौन सी पॉसिबल चार चीजों में से द सप्रेशन इज गोइंग टू अकर। मॉडर्न मेडिसिन एम्पेरिकली जब दी जाती है तो व्हाट इज इट, इलेक्ट्रिसिटी एंड एक्सरेज यूज टू अरेस्ट डीप पैथोलॉजिकल एक्सप्रेशंस, ठीक है। रेडियोथेरेपी वगैरह जो हो गया, आइसोटोप ट्रीटमेंट्स एंड ऑल ऑफ इट, प्लस पावरफुल ड्रग्स यूज्ड फॉर कैंसर, ल्यूपस, ट्यूमर्स एंड सोरियासिस, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपका स्टीरॉयडल एप्लीकेशन, स्टीरॉयडल मेडिकेशंस वगैरह जब देते हैं, that is going to lead to suppression. Second would be surgical, physical removal of the organ, treating the result rather than the root cause, ठीक है। जो बाय प्रोडक्ट है डिजीज का आप उसे ही हटा दे रहे हो, but the disease is going to stay in that patient somewhere, ठीक है। तो वहां पे भी होता है suppression. Physical and traditional, mineral baths, sulfur for skin issues, medicated douches, cautery using silver nitrate or copper sulfates on warts, ठीक है। ये तो अभी भी काफी common practice है, the physical and the traditional part, which will lead to suppression. Lifestyle activators, excessive use of tea, coffee, spiritual liquors, highly seasoned food, tobacco usage, especially when drugged with arsenic, opium or tonka beans, ठीक है। तो ये लाइफस्टाइल एक्टिवेटर्स जो अपन स्टिमुलेंट्स बोलते हैं ना अपने, ये सब जब ज्यादा यूज हो रहा है, एंड दीज ओनली एक्चुअली फॉर्म एज द मेंटेनर्स ऑफ द डिजीज, ठीक है। ट्रिगर तो बाद में होगा, डिजीज इज गोइंग टू स्टे ओनली देयर बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। तो अगेन दिस इज व्हाट सप्रेशन comes in through. The next we are going to see the mutation of the primary miasm, ठीक है। म्यूटेशन ऑफ द प्राइमरी माइजम, म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, परमानेंटली चेंज हो जाती है, ठीक है, देन दैट्स नॉट फॉर गुड, ओके। उसके साइड इफेक्ट वाले जब पार्ट्स आ जाते हैं तब होता है म्यूटेशन। सो द स्टेप वन इज द प्राइमरी सोरा, सिंपल इच एंड फाइन वेसिकुलर इरप्शंस। सेकेंड इज स्टेप टू, अनसाइंटिफिक ट्रीटमेंट, जो हम लोगों ने अभी सप्रेशन वाले चार चीजें देखे। सो द एप्लीकेशन ऑफ सप्रेसिव मेजर्स एंड केमिकल थेराप्यूटिक्स। स्टेप थ्री, यहाँ पे आएगा स्ट्रक्चरल चेंज, द वाइटल फोर्स इज डिसऑर्डर्ड, forcing the miasm to undergo several internal structural changes, ठीक है। अब स्टेप फोर में सेकेंडरी एक्सप्रेशन manifests as eczema, psoriasis और evolves entirely into highly complex psychosis, syphilis और tubercular state, ठीक है। एक सादी सी इच, एक सादा सा इरप्शन, एक सादा सा रैश has come down and converted and manifested itself into eczema, ठीक है। और ये सारे stubborn चीजें होती है, skin diseases are very stubborn when suppressed, and when they come on later with difficult and complex diagnosis, guys, it is not easy to treat skin diseases, get that straight. But when you follow our cardinal principles, when you follow our simple rules, simple hacks, simple tips and simple tricks, okay, this becomes important. इसीलिए पढ़ना है माइज्म और माइज्मेटिक बैकग्राउंड, ठीक है, ताकि ये एक्जिमा हो, सोरियासिस हो या हाईली कॉम्प्लेक्स साइकोसिस, सिफिलिस, ट्यूबरकुलर स्टेट्स हो, you are well prepared to deal with it. Now how are we going to recognize these mixed miasm, okay। सोरा दिखा आपको,
सिफिलिस है, सोरा एंड सिफिलिस टुगेदर इज व्हाट जेएच एलन कॉल्ड एज सूडो सोरा. ठीक है, वी हैव कवर्ड दैट इन अ लास्ट वीडियो एज वेल. इट इज नथिंग बट आर tubercular miasm. The malignant union of Sora and syphilis, considered vastly worse and more destructive than Sora alone. Obvious सी बात है, Sora अपने में ही dangerous है. All of us know that, right? Syphilis is the hallmark destruction miasm, the one which showcases destruction. ठीक है, जब वो मिल जाता है सोरा के साथ में, which is already having such grave manifestation, such severe manifestation, दो आप उसको बोलते हो ये functional level पे, but there is nothing more deadly than sora actually, you know that. तो सब syphilis उससे मिलेगा तो it is going to become this malignant union, and that is the tubercular miasm. Diagnostic clues for mixed miasm: presence of two or more miasm is typically indicated by malignant acute inflammatory states. Example: pneumonia, diphtheria, inflammation of brain and kidneys. ठीक है, जो सारे examples जिस हिसाब से covered होंगे, and these words are supposed to be written in this manner only. Okay, seemingly simple but stubbornly unresponsive conditions like neuralgia, rheumatism, piles and chronic ulcers. ठीक है, miasmatic therapeutics में आएगा ये, आपको medicine में भी आता है ये. ठीक है, so this is how you are going to diagnose if it's mixed miasm or not. ठीक है, these are something to be studied in detail which will be covered later, but अभी के लिए for our concept and for lecture today, this is important and this is required. The direction of true cure: एक्स एंड वाई एक्सिस. ठीक है, टाइम प्रोग्रेसिंग, डेप्थ ऑफ डिजीजेस, डीप वाइटल इंटरनल ऑर्गन्स, ऊपर जाता है सरफेस स्किन. ठीक है, तो वन फर्स्ट स्टेज पे है ओवरपावरिंग द डिजीज. High potencies of the correct similar remedy interacts dynamically with the life force. ठीक है, high potency of the correct similar remedy. Step 2: reversing the sequence. Symptoms disappear in the exact reverse order of their initial appearance. Herring's law of cure comes in over here. Third is the outward expression. The disease is pushed safely away from vital organs. Correct treatment frequently reproduces old skin eruptions as a necessary release. ठीक है? Clinical synthesis, very important. A clinical example given by J.H. Allen. Initial presentation of this patient was: patient presents with severe anal fissure and significant rectal trouble. Based on the totality of similar outward symptoms, the physician administers a single dose of sulfur 50 m. The rectal symptoms completely vanish. However, they are immediately replaced by a profuse biting and burning leukorrhea. ठीक है, तो अब ये जो पेशेंट थी जे.एच. एलन के पास में, शी हैड एनल फिशर्स एंड सिग्निफिकेंट रेक्टल ट्रबल. तो उसके बेसिस पे देयर वाज सल्फर एम व्हिच वाज गिवन, एंड द आउटवर्ड सिम्टम द फिजिशियन सिर्फ आउटवर्ड सिम्टम के बेसिस पे. फिर रेक्टल सिम्टम्स तो ठीक हो गया, बट द पेशेंट केम इन विद प्रोफ्यूज बाइटिंग एंड बर्निंग ल्यूकोरिया. अभी इसका uncovering the latent miasm, what is it? Okay, now don't get scared by reading gonorrheal psychosis right away. Okay, we will read out the text first. The sudden outward appearance of the leukorrhea proves the vital force is active, triggering a deep investigation into the patient's history. Past history जो लेना है हमें comes in here. The hidden source: the patient had unknowingly contracted a suppressed miasm, gonorrheal psychosis, from her husband. ठीक है, the mechanism: the husband's psychosis was violently suppressed after an episode of acute rheumatism. This acquired latent state manifested outwardly in the wife as mere rectal trouble. ठीक है, अब ये याद रखना है आपको, ये सब हम जो माइजम और वाइटल फोर्स, एवरीथिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ऑन द डायनामिक लेवल. ठीक है, तो इसका जब ट्रांसमिशन हुआ, दिस साइकोसिस, दिस गोनोरियल साइकोसिस केम इन थ्रू हर हस्बैंड. ओके, वहां पे द हस्बैंड साइकोसिस वाज वायलेंटली सप्रेस्ड आफ्टर एपिसोड ऑफ acute rheumatism. ठीक है, and then this acquired latent state came it in an expression, like an expression in the wife's rectal trouble. Rectal trouble को तो ध्यान दे दे, came in through leukorrhea. ठीक है, तो यहाँ पे जब केस टेकिंग हुई एंड इन डिटेल,
तब जाके पता चला गोनोरियल साइकोसिस था. So the final intervention was armed with the knowledge of the true underlying cause. The physician prescribes a single dose of sulfur cm. Okay, the rationale: the curative remedy must correspond to the specific pathogenesis of the active miasm. The extreme CM potency matches the newly aroused depth of psychosis. ठीक है, तो हम लोग ने कहा था ना हाई पोटेंसी देना है डायरेक्शन ऑफ क्योर वाले स्लाइड में. ठीक है, तो हाई पोटेंसी अपनी ये पोटेंसी है. Okay, so the fundamental miasm is identified, targeted, and completely resolved, resulting in the eradication of all symptoms and a true lasting cure. ठीक है, single simple remedy again, similimum. Allen has always been supportive of one similimum to be given for the disease condition. Okay, अब जो अपना हम लोगों ने एग्जाम्पल अभी देखा था, दैट एग्जाम्पल हैज टू बी रिटन इन दैट मैनर व्हेन यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ पैथोलॉजी एंड एबनॉर्मल ग्रोथ. Okay, in and also when there is an introduction question about to discuss sora or pseudo sora along with chronic miasm. ठीक है, तो पैथोलॉजी वाली बात आ जाएगी, इंट्रोडक्शन ऑफ सोरा वाली बात आ जाएगी, एंड chronic miasm by J.H. Allen. You are going to cover the examples. ठीक है, and also the certain words which have been discussed are taken up along the entire lecture. The lens of the true physician: perceive diseases not as localized chemical failures but through its entire miasmatic expression. Recognize patterns of internal progression, whether the vital force advances, retreats, or pauses. A similar remedy, more powerful in nature, will overpower the disease, but only when the basic miasm is identified correctly. Footnote to aphorism 107, Organon 6th edition. ठीक है, इसको भी लिखना बहुत जरूरी है. Alright, as it is, nothing, no change over here. Alright, so it's been, that's all for this lecture. Coming up next would be Sora and Pseudosora according to Dr. J.H. Allen. I hope this was useful for you guys. Now, these concepts are vast, children. I cannot put it in just in a few bullet points in one, two slides and explain you off the entire thing. Okay? Understanding the concept is important because later on you can reproduce it that well. Remember, this is Organon. This is philosophy of Organon. ठीक है, तो उसको समझने के लिए आपको उसका डेप्थ भी समझना पड़ेगा, राइट. व्हेन वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द माइस्मेटिक रूट्स ऑफ द डिजीजेस, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू गो टू दैट रूट, राइट. ऊपर ऊपर का सिर्फ नहीं पढ़ने वाले. सो या इट्स गोइंग टू टेक लॉन्गर टू एक्सप्लेन दीज कॉन्सेप्ट्स, बट इट्स गोइंग टू बी वेरी इफेक्टिव एंड समथिंग दैट यू वोंट फॉरगेट ever in your lives. All right, so follow me up on Instagram at the Organon Classroom. If there's any problem, any query, any suggestion, either write it down in the comments over here in the video or DM me on Instagram. Okay, learn well, stay well, and have fun, guys. Thank you so much.